Okay, ji. Assalamualaikum class. It's me, Aruj from Management Sciences Department of University of South Asia. I hope you all are doing great and you people are safe at homes. So, in today's lecture, we'll be practicing some more questions related to the basic probability, addition law, and moreover the conditional probability. So, we'll be practicing the questions in the form of MCQs so that we can grasp the concept as much as we can. So coming towards the first MCQ, two events A and B are said to be mutually exclusive if they have no common points, or they have the common points, or probability A union B is equal to 0, and the D option is all of these. So what does mutually exclusive means? Mutually exclusive means that nothing is common in between the two events A and B. For instance, if you have an event A that head appears and you have an event B that tail appears, so nothing is common in between both of these events. So we're just supposed to say that the events are mutually exclusive. So when they have no common points, then we can say that the events are mutually exclusive. Then comes they have common points. So this is the incorrect option. Probability A union B is equal to 0. This is also incorrect because probability A intersection B is equal to 0 in case of mutually exclusive. Intersection means that the common points between event A and B. So that must be 0 in case of mutually exclusive. But here you can see the symbol of union. So this is the incorrect option, and obviously all of these will be also incorrect. Coming towards the second MCQ, a set of all possible outcomes of an experiment is called what? The sample space, combination, permutation, or the compound event. Simply, if you have a random experiment and in that particular random experiment, if all the possibilities are written in the form of set, then we're just supposed to say that it's called as a sample space. For example, if you toss a coin once, if you write the options or the sample points in the form like sample space is what? That is equal to head, comma, tail. So this is the sample space. So when you have a random experiment and if all the possibilities are written in the form of set, then it's defined as a sample space. Combination is something that when you need to select the R objects out of N objects without respect to some sort of order, then it's defined as a combination. Then comes permutation. What does permutation means? When you need to select the R objects out of N objects and order matters. So we'll be using permutation. And what is compound event? For example, if you have two or more sample points in that particular event, then we're just supposed to say that it's a compound event. So these three options do not belong to this statement. So the correct option is the sample space. Then comes the events having no experimental outcomes in common is called what? That is called mutually exclusive, exhaustive events, independent events, equally likely events, or which is the correct option. So they're just saying that the events having no experimental outcomes in common. So we have already studied that when nothing is common in between the successive events, then that means के events आपके पास क्या हैं? They are mutually exclusive. And what does exhaustive means? Exhaustive means the union of the mutually exclusive events results in the entire sample space. Then your events are said to be exhaustive. And what does independent event means? That means कि अगर आपके पास दो events at once occur हो रहे हैं and no effect is obtained, like if you have an event A and an event B के occur करने से A में कोई impact या कोई effect ना पड़ता हो or no change occurs just because of that event B into the event A, then we're just supposed to say that the events are independent.
तो ये वाला केस किस में नहीं आता। इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्या मतलब है, दैट देयर आर इक्वल चांसेस फॉर ईच एंड एवरी इवेंट टू अकर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपसे कॉमन पॉइंट्स का पूछा जा रहा है तो क्लियरली हमें पता चल रहा है दैट द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिगार्ड टू देयर ऑर्डर। सिंपली जब आपने आर ऑब्जेक्ट्स को एन ऑब्जेक्ट्स में से चूज करना है बट विदाउट रिगार्ड टू देयर ऑर्डर, व्हेन ऑर्डर डजंट मैटर, सो सिंपली द कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। Whereas permutation, probability, equally likely events, these three do not belong to this statement. Coming towards the fifth MCQ, if 3 candidates are selected to attend a course from the 10 candidates, the number of ways of selecting the candidates is an example of. Now you have to select the 3 candidates out of these 10 candidates. ठीक है, ताकि वो कोई कोर्स अटेंड कर सके। व्हाट आर द पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्टिंग द कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर देखो, हमने जब 3 कैंडिडेट्स को 10 कैंडिडेट्स में से सिलेक्ट करना है तो ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है, वी जस्ट नीड टू नो कि तीनों कैंडिडेट्स किस किस तरह से आ सकते हैं। सो जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो सिंपली वील बी यूजिंग कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ लिखा जाता आर सिलेक्टेड इन सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर या आर सिलेक्टेड इन सम sort of alphabetical order या कोई भी आपके पास specify कर दिया जाता, restriction लगाई जाती, तो that means it's an example of permutation. Which of the following cannot be taken as probability of an event? What is the range of probability? Probability ranges in between 0 and 1. That means it cannot be negative, it's always a non-negative, and if you say that probability lies between 0 and 1, तो फिर 0 and 1 के दरमियान में आपके पास 0.5 भी लाई करता है, 0 भी लाई करता है, 1 भी लाई करता है, but minus 1.5, it's the incorrect option. It can never be negative. A particular result of an experiment is called what? Simply, if you run a random experiment, as a result आपके पास कोई भी कुछ भी आ रहा है, it's defined as an outcome. For example, if you toss a coin once, either a head can occur or a tail can occur. So a head and a tail is an example of what? It's basically the outcomes. जो भी रिजल्ट आपके पास आएगा किसी भी एक्सपेरिमेंट को, उसको हम मैथमेटिकली या साइंटिफिकली जो टर्म्स यूज करते हैं उसमें हम उसको आउटकम बोलते हैं। What does trial means? Trial means कि आप number of times एक एक्सपेरिमेंट को रन कर रहे हो. This is incorrect. Simple event that possesses one sample point, and what is compound event that possesses 2 or even more sample points. So these 3 are incorrect and the outcome is the correct option. Coming towards the eighth MCQ, an arrangement in which the order of the objects selected from a specific pool of objects is important. Now you have to select the objects but in a specific pool of objects. अब यहाँ पर देखें order की importance है, यहाँ पर भी देखो in which the order of the objects selected from a specific pool of objects. आपने उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ही अरेंजमेंट पे फोकस करना है। तो जब भी ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होती है, दैट मीन्स वील बी यूजिंग परम्यूटेशन ओवर देयर, and these 3 options are incorrect. When a die and a coin are rolled together, all possible outcomes are what? अब आपसे कहा जा रहा है कि आपने एक डाई को और एक कॉइन को रोल किया। जब आप एक डाई को रोल करते हो, आपके पास क्या होती हैं ऑप्शंस? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं आपके पास व्हेन यू रोल अ डाई वंस। देन कम्स इफ अ कॉइन इज रोल्ड। अब कॉइन को जब करोगे, कॉइन के लिए आपके पास क्या आउटकम्स आएंगे? ईदर अ हेड विल अकर और अ टेल विल अकर। सेम गोज फॉर दिस वन। अगर आपके पास 2 अकर किया है तो सेकेंड टाइम जब आप रोल करोगे, ईदर अ हेड विल अकर और अ टेल विल अकर। और अगर 3 अकर किया है तो फिर जब आपने कॉइन टॉस किया, ईदर अ हेड विल अकर और अ टेल विल अकर। सेम गोज फॉर दिस वन। अगर आपके पास 4 अकर किया है, ईदर अ हेड विल अकर और अ टेल विल अकर।
And if 5 occurs, that means either a head will occur or a tail can occur when a coin is tossed. Same goes for this one. अगर 6 occur कर रहा है तो या तो head या तो tail. उसके sample points किस तरह enlist किए जा सकते हैं? 1 head 1 tail, 2 head 2 tail, 3 head 3 tail, 4 head 4 tail, 5 head 5 tail, 6 head 6 tail. So 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? टोटल आपके पास 2 into 6, टोटल 12 पॉसिबिलिटीज होगी. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, then comes if 3 coins are tossed, the possible outcomes are. अब आपने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है. If at once a coin is tossed, either a head can occur or a tail can occur. Then if again a coin is tossed, फिर आपके पास क्या ऑप्शंस रहती हैं? तब भी आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज ही एग्जिस्ट करती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. सिमिलरली अगर एट फर्स्ट टेल आया है तो सेकेंड टाइम इधर अ हेड विल अकर और अ टेल विल अकर. मोर ओवर अगर फर्स्ट टाइम हेड है, सेकेंड टाइम हेड है, तो फिर थर्ड टाइम पे आपके पास जब रोल करोगे कॉइन को तब भी क्या आएगा? या तो हेड या तो टेल. ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम हेड देन टेल, फिर थर्ड टाइम या तो हेड या तो टेल. सिमिलरली एट फर्स्ट टेल देन हेड और थर्ड टाइम जब रोल करोगे या तो हेड या तो टेल. लाइकवाइज एट फर्स्ट टेल देन सेकंड पे भी टेल और फिर जब थर्ड टाइम आप रोल करोगे या तो हेड या तो टेल. सो हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल. Okay. So how many sample points exist in this experiment? Head, 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 tail, head, tail, head, head, tail, 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 head, head, tail, head, tail, 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 head, tail, tail, tail. So these are a total of 8 sample points. So 8 is the correct option. Then comes, in a group of 6 boys and 4 girls, 4 children are to be selected. In how many different ways can be selected such that at least one boy should be there? Now you have a total of 10 children. Out of these 10 children, we have 6 boys and 4 girls. So 6 plus 4 is equal to 10. Now you have to select 4 children out of these 10 children. How many different ways can they be selected such that at least one boy should be there? At least one boy means minimum one boy and maximum जितने boys आएंगे वो इस particular category में fall करेंगे. So at least one boy means minimum one boy, maximum 4 boys, because you have to select 4 children. So simply 1 plus 3 is equal to 4, 2 plus 2 is equal to 4, 3 plus 1 is equal to 4, 4 plus 0 is equal to 4. So what is the correct option? 6C1 multiply by 4C3 plus 6C2 multiply by 4C2 plus 6C3 multiply by 4C1 plus 6C4 multiply by 4C0. So these are the total number of possible outcomes. That means number of favorable outcomes in an event A. And what was event A? That at least one boy should be there. We need to select only the possible ways. We're not asking about the probability.
तो जब पॉसिबल वेज की बात की जा रही है तो हमारे पास ये फेवरेबल आउटकम्स ही मांगे जा रहे हैं इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए. So right after simplifying the question, you'll be getting the answer 209. From a group of 7 men and 6 women, 5 persons are to be selected to form a committee so that at least 3 men are in the committee. How many ways can it be done? So you have a total of how many people in the group? 7 plus 6. That means a total of 13 people are there. Out of these 13 people, you have 7 men and you have 6 women. So 7 plus 6 is equal to 13, and out of these 13 people, you have to select 5 people and in a form of to form a committee so that at least 3 men are there in the committee. At least 3 means minimum 3 and maximum 5. Why 5? Because you have to select 5 people out of these 13 people. So 3 plus 2 is equal to 5, 4 plus 1 is equal to 5, 5 plus 0 is equal to 5. So what will be the possibility? 7C3 multiply by 6C2 plus 7C4 multiply by 6C1 plus 7C5 multiply by 6C0. So these are the all possibilities when you need to select at least 3 men out of these 7 men, and then you need to select the 5 persons out of these 13 persons. So right after simplification, you'll get the answer 756. Now, if you have a statement that a certain carton of eggs has 3 bad eggs and 9 good eggs, an omelette is made up of 3 eggs randomly chosen from the carton. What is the probability that there are no bad eggs? So now you have a total of how many eggs? 9 plus 3. That means you have a total of 12 eggs. Out of these 12 eggs, they are saying an omelette is made of 3 randomly chosen from the carton. अब आपके पास इन 12 eggs में से 3 eggs की ज़रूरत है just to make an omelette. So you have the categories. The first one is the bad eggs and the second one is the good eggs. So how many bad eggs do you have? You have 3 bad eggs and 9 good eggs. So 3 eggs are to be selected. What is the probability that there are no bad eggs? So that means if there are no bad eggs, so 0 plus 3 is equal to 3. All 3 eggs will be good. So 3C0 multiply by 9C3 divided by 12C3. So this is the probability, and right after simplification, you'll get the answer 85 divided by 210. Coming towards the next MCQ, a box contains 15 items, 4 of which are defective and 11 are good. 2 items are to be selected. What is the probability that the first is good and second is defective? So simply you can define an event A as what? That the first is good. First, again sorry class, just because of the handwriting, because it's very difficult to write over here and I cannot use the whiteboard over here. First is good.
And what is an event B? Event B is defined as the second is defective. Oops. Okay, second is defective. So, second is defective means you have to compute the probability that the first is good, that means event A, and second is defective, that means event B. So, according to the multiplication rule, what will come in the given condition? That means कि आपके पास second की बारी तभी आएगी जब first event already occur हो चुका होगा. That means first item select होगी, then ही second item select हो सकती है ना. तो first is good वाला event पहले occur हो चुका होगा. That means given से नीचे event A आएगा और given से ऊपर event B आएगा. And whatever is given under this condition, वही चीज as a multiple उसके साथ चली जाती है. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए मीन्स कि आपके पास एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है. दैट मीन्स एक आइटम ऑलरेडी आप चूज कर चुके हो और आपने अब सेकेंड आइटम सेलेक्ट करनी है. तो अगर एक आइटम आप ऑलरेडी चूज कर चुके हो तो आपकी सैंपल स्पेस रिड्यूस हुई, बिकॉज आपके पास टोटल कितनी आइटम्स थी? आपके पास टोटल 15 आइटम्स थी. उन 15 आइटम्स में से अगर एक आइटम ऑलरेडी आप चूज कर चुके हो, दैट मीन्स यू आर जस्ट लेफ्ट विद 14 आइटम्स. Now, out of these 14 items, you have to compute the probability that the second is defective. That means event B. Event B क्या है? Second is defective. So, how many defective items are there in a box? That means we have a total of 4 items that are defective, and none of the item was selected from this category because the first item selected was good. So that means we still have 4 of the items that are defective in the box. So 4 by 14 is the probability of B given A. Then comes probability of an event A. Now what is event A? Simply the first is good. That means we have a total of 15 items. Out of these 15 items, you have to select that the first item selected is good in nature. So how many good items do you have in a box? You have a total of 11 items that are good. So 4 by 14 into 11 by 15 is the probability of A intersection B. And right after simplification, you'll get the answer 0.16. That means 1 by 4. Coming towards the next question, in a box, there are 8 red, 7 blue, and 6 green balls. One ball is picked up randomly. What is the probability that it is neither red nor green? So simply what you'll be doing is you have a total of how many balls? You have a total of 8 plus 7 plus 6. That means 8 plus 7 plus 6, we have a total of 21 balls. And how many are red and how many are blue, whereas how many are green? We have a total of 8 red, 7 blue, and 6 green. 8 plus 7 plus 6 is equal to 21. One ball is picked up randomly. What is the probability that it is neither red nor green? That means ना ही वो red हो, ना ही वो green हो. So it means कि वो जो एक आपने ball select की है, that will be blue in color. So 8C0 multiply by 7C1 multiply by 6C0 divided by 21C1. And right after simplification, you'll get the answer 1 by 3. Coming towards the next MCQ, that is, what is the probability that a student plays on a sports team
given that they don't play an instrument. So now you can simply see that here the word given is used. So if the word given is used, simply we'll be using a conditional probability. So you can define it that the student plays on a sports team as an event A. This is an event A. And given that they don't play an instrument, you can define it as an event B. So A given B is equal to probability A intersection B divided by whatever is given under the condition, or you can say that under this slash line, you'll be writing it as in a denominator term. So probability A intersection B means that he'll be playing on a sports team and he'll be playing an instrument. So A intersection B. A means he'll be playing on a sports team and B means he don't play an instrument. So what is the possibility of this particular experiment? आपके पास क्या है? Event A, the student plays on a sports team. Student plays on a sports team. आपके पास ये वाली कैटेगरी आ रही है. And आपके पास event B क्या है? That they don't play instrument. If they doesn't play instrument, तो आपके पास ये वाला केस आता है. ये वाला केस क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट दे प्ले टीम स्पोर्ट. ये आपके पास इवेंट ए था और इवेंट बी था दे डजंट प्ले इंस्ट्रूमेंट. सो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 2. ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ गए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. वो आपके पास कितनी है? वो आपके पास 20 है. तो 2/20 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी. दैट मीन्स इवेंट बी आपके पास क्या था? दे डोंट प्ले एन इंस्ट्रूमेंट. तो जो इंस्ट्रूमेंट नहीं प्ले कर रहे वो टोटल हैं कितने? 2 + 7 दैट इज इक्वल टू 9. 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं who are not playing instrument. So 9 divided by total number of students जो कि कितने हैं? 20. So right after simplification you'll get the answer 0.222. Now coming towards the next example, Mary is a good student. The probability that she studies and passes her test is 3/5. If the probability that she studies is 8/10, what is the probability that she passes given that she studies? So you can simply define that she passes as an event P, or you can say that PA. PA is much better because P is usually used for probability. So PA is defined as an event that she passes, and the event S as she studies. तो आपने probability निकालनी है किस चीज की? That she passes, and for given आपके लिए slash use किया and she studies के लिए event S. So simply probability of what? That she passes intersection she studies divided by probability of the students that they are studying. So probability that you have to compute of the student that she passes and she studies. Then you can see the data. The probability that she studies and passes her test is 3/5. ये आपके पास already given है. So 3/5 is the probability that she studies and she passes divided by probability that she studies. So you've been given this probability as well, that if the probability that she studies is 8/10, so 8/10, and right after simplification you'll get the answer 0.75. Coming towards the next question, what is the probability that a female is chosen given that they like a Toyota? अब आपके पास क्या है? Probability आप find out करना चाह रहे हो that female is selected and given क्या है? That she likes Toyota. So simply by using this conditional probability formula, that is she is a female and
शी लाइक्स टोयोटा डिवाइडेड बाय व्हाटएवर इज गिवन अंडर दिस कंडीशन, वो ही चीज आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में आती है. सो probability of female and she likes Toyota is what? ये देखो आपके पास फीमेल्स का डेटा है, ये फीमेल्स का डेटा है, और यहाँ से देखो जो टोयोटा पसंद करती हैं. सो वी हैव 21 females who likes Toyota. So 21 are the favorable outcomes divided by total number of males and females. वो कितने हैं आपके पास? 67. So 21 by 67 is the probability that she is a female and she likes Toyota, divided by probability of the one who likes Toyota. So you can see in this category, इस कैटेगरी में आपके पास मेल्स जो हैं वो 10 हैं जो कि टोयोटा को पसंद करते हैं, and 21 females are there that likes Toyota. So total number of favorable outcomes जो कि टोयोटा के हैं वो कितने हैं? वो हमारे पास 31 है. So 31 are the favorable outcomes of this event T divided by total number of males and females, that is 67. So 21 divided by 31 is equal to 0.6774. Okay, so now coming towards the next example. Two cards are drawn from a pack of ordinary playing cards. Find the probability that the second card drawn is a club. Now you have to compute the probability कि जो आप second card choose करोगे that should be a club. So what are the possibilities? The possibilities are it can happen that the first card can be a club. Second तो होगा ही club. हो सकता है कि first वाला भी club हो. So simply you can define C1 as that the first is what? First is club. What about C2? That the second is club. What about the case that the first card can belong to any other suit? That means you can define it as an event N, that the first is not a club. That means it can be a heart, a diamond, or a spade. So simply we'll be using multiplication rule over here. You have to compute for the probability that the second card selected is a club. So what is the first possibility? First possibility is that the first is club and second is also club. Plus, what is the second possibility? That the first is not a club and second is a club. All right. Then comes how to use these multiplication rules. हम किस चीज़ की probability निकाल रहे हैं? हम second card club हो इसकी possibility निकाल रहे हैं. तो probability C1 intersection C2 किसके equal होगा? हम जिस चीज़ की probability निकालते हैं वो चीज़ हमेशा ऊपर आती है, तो C2 ऊपर आएगा. Given में क्या है कि first card occur हो चुका है, तो first card occur होगा then ही second की बारी आएगी, and it's quite obvious. And whatever is given under this condition वही चीज़ as a multiple उसके साथ आ जाती है. So probability of C1 plus probability of N intersection C2. That means the second card is selected and given में क्या है? First card is also selected but it's not a club. और जो चीज़ नीचे denominator में होती है वही चीज़ as a multiple साथ आ जाती है. So C2 given C1 means कि एक कार्ड सिलेक्ट हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गई. अगर सैंपल स्पेस आपकी रिड्यूस हुई है दैट मींस 52 कार्ड्स में से 51 कार्ड्स आपके पास रह गए हैं. अब इन 51 कार्ड्स में से आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सेकंड कार्ड आप चूज करोगे दैट इज अ क्लब, जबकि फर्स्ट कार्ड जो आपने चूज किया था वो भी क्या था? क्लब.
और टोटल क्लब के कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल 13 कार्ड्स होते हैं क्लब के। तो दैट मीन्स अगर 13 कार्ड्स में से पहला कार्ड सेलेक्ट हुआ था और वो क्लब का ही था, तो फिर आपके पास कितने कार्ड्स रह गए? 12। 12 by 51 is the probability of C2 given C1 multiply by probability of C1. Now what does probability of C1 means? कि first card selected is a club. So simply आपके पास क्या है? 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स में से आपने क्लब को चूज करना है। तो दैट इज 13 कार्ड्स में से कोई सा भी कार्ड आ सकता है। 13 by 52 is the probability of C1 plus probability C2 given n. C2 given n means कि फर्स्ट कार्ड ऑलरेडी चूज कर चुके हो। अगर फर्स्ट कार्ड ऑलरेडी चूज कर लिया है तो सैंपल स्पेस प्रोड्यूस हुई, और अब आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि जो सेकंड कार्ड आप चूज करोगे दैट इज अ क्लब, जबकि पहला कार्ड जो आपने चूज किया था वो क्लब का नहीं था। तो दैट मीन्स अभी भी 13 के 13 कार्ड्स आपके पास क्लब्स के हैं। So 13 by 51 is the probability of C2 given n. Then comes probability of n that the first card selected is not a club. So that means कि आपके पास 52 कार्ड्स में से क्लब वो ना हो। तो 3 सूट्स ऐसे हैं जो कि क्लब को बिलोंग नहीं करते, दैट मीन्स योर हार्ट्स, डायमंड्स एंड स्पेड्स। So 13 plus 13 plus 13 is equal to 39 cards that are not of club. So right after simplification, you'll get the answer 1 by 4. Now coming towards the next MCQ, what is the probability that a randomly selected poker hand contains exactly 3 aces given that it contains at least 2 aces? Given का word use किया जा रहा है, तो simply that means we'll be using conditional probability. Given से पहले वाले को event A define कर दो and given के बाद वाले को event B. Probability A given B is equal to probability A intersection B divided by probability of an event B. ठीक है? So probability A given B that is equal to probability A intersection B divided by probability B. तो probability A intersection B आपके पास क्या होगा? That it is exactly having 3 aces and it contains at least 2 aces. तो पहले event A के outcomes हम देख लेते हैं। टोटल आपके पास क्या है? टोटल आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से पोकर हैंड की बात की जा रही है, तो पोकर हैंड का मतलब है 5 कार्ड्स की सिलेक्शन होगी। एक कैटेगरी आपके पास एसेस की आएगी क्योंकि एसेस को आपने फाइंड आउट करना है, और टोटल 4 एसेस होते हैं। 4 इज नॉट इक्वल टू 52, दैट मींस देयर एग्जिस्ट अनदर कैटेगरी जिसको आप अदर्स का नाम डिफाइन करोगे, और उसमें आपके पास 48 अदर कार्ड्स आ जाते हैं। नाउ 4 plus 48 is equal to 52. Out of these 52 cards, you have to select the 5 cards and you need to compute the probability that the exactly 3 aces will occur. Means in 4 aces में से 3 aces choose होंगे, तो 3 plus dash is equal to 5. 3 plus 2, तो ये आपके पास exactly 3 aces का केस आ गया। ये आपके पास है event A के लिए। Then comes at least 2 aces. At least 2 aces का क्या मतलब है? आपके पास total 52 cards हैं, इसमें से 5 कार्ड्स चूज करने हैं। एक कैटेगरी एसेस की बन रही है, एक अदर्स की। एसेस कितने हैं? 4, और अदर्स कार्ड्स कितने हैं? 48। नाउ 4 plus 48 is equal to 52. You have to find the probability that it contains at least 2 aces. At least 2 aces means minimum 2 and maximum कितने aces हो सकते हैं? Maximum 4 aces तक जा सकते हैं क्योंकि टोटल ही 4 aces होते हैं एक कंप्लीट डेक में। So 2 plus 3 is equal to 5. 3 plus 2 is equal to 5. 4 plus 1 is equal to 5. So this belongs to event B and this belongs to event A. तो A and B का अब आपने कॉमन पॉइंट निकालना है। तो आप ये देखो, ये जो 4C3 मल्टीप्लाई बाय 48C2 डिवाइडेड बाय 52C5, ये चीज और ये चीज और ये वाली चीज कॉमन है,
तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B क्या आता है? A इंटरसेक्शन B हमारे पास आता है 4C3 मल्टीप्लाई बाय 48C2 और डिवाइडेड बाय 52C5। ये चीज आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में आ गई और उसको फिर डिवाइड कर दिया किस चीज के साथ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी क्या है? ये आपके पास बी था 4C2 मल्टीप्लाई बाय 48C3 प्लस 4C3 मल्टीप्लाई बाय 48C2 प्लस 4C4 मल्टीप्लाई बाय 48C1 ये चीज और डिवाइडेड बाय 52C5। ये चीज आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में आएगी और प्रोबेबिलिटी A यूनियन B की जगह आ जाएगा 4C3 मल्टीप्लाई बाय 48C2 डिवाइडेड बाय 52C5। So taking the ratio of both of these terms and right after simplification you'll get the answer 0.04. So this is the correct option. So this was all about today's lecture. Basically what we've done in today's lecture, we have practiced 20 MCQs related to the topic basic probability, addition law and conditional probability. Simply, what is the basic probability concept? Simply the ratio of number of favorable outcomes in an event A divided by number of sample points in the entire sample space. Then comes the addition law. Now what is addition law? Simply if you have two events, probability A union B, if that is equal to probability A plus probability B minus probability A intersection B, then it's defined as addition law. अगर आपके पास क्वेश्चन में either or at least का वर्ड यूज किया गया हो, then we're just using addition law over here. अब एक क्वेश्चन को करने के डिफरेंट वेज हैं. फॉर इंस्टेंस आपके पास ये वाला केस होता, how many different ways can they be selected such that at least one boy should be there? At least one boy का मतलब है minimum one boy और maximum जितने boys आ सकते हैं इस केस में. तो हमारे पास एडिशन लॉ कब यूज किया जाता है? ईदर और, एटलीस्ट या कॉमास गिवन हो तब हम एडिशन लॉ यूज कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन को मैंने इसके थ्रू भी किया है, आप चाहो तो इसको एडिशन लॉ के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो. There are some sort of alternative ways through which you can solve the questions. So it's all up to you. You have the choice. जो सा आपको मेथड इजी लगता है, जिस पे आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, उसके थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया करो. ठीक है. Then comes the conditional probability. Conditional probability आपके पास सिंपली क्या था? सिंपली कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाए और उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन की वजह से अगर आपकी सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाती है, तो रिड्यूस सैंपल स्पेस रिलेटेड जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं. तो आप देखो जहां जहां क्वेश्चंस में गिवन वर्ड यूज किया जा रहा था, हम सिंपली उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू ही सॉल्व कर रहे थे. एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अलावा हम लोग के पास एक मल्टीप्लिकेशन रूल था. मल्टीप्लिकेशन रूल आपके पास क्या होता है? सिंपली आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, डिनोमिनेटर वाली जो टर्म होती है, अगर यहाँ पर वो डिवाइड हो रही है तो दूसरी जगह जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और मल्टीप्लाई होके आपके पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी वाली टर्म आ जाती है. तो इसको मल्टीप्लिकेशन रूल कहते हैं. ठीक है. तो एक क्वेश्चन में आप दो या दो से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन रूल्स इंपोज कर सकते हो. इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि आपके पास क्वेश्चन का सिनेरियो क्या है, उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आप वो डिफाइन कर देते हो मल्टीप्लिकेशन रूल. तो सिंपली इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा. एंड दीज वर द क्वेश्चंस दैट आई हैव बीन गिवन यू इन द क्विज. 3 क्विजेस अब तक हो चुके हैं. तीनों क्विजेस में मैंने आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में दिया था. ये उनके सॉल्यूशंस हैं. Do watch the video, and still if you'll find any difficulty you may ask me via email or we'll be having an interactive session as well. तो आप एक interactive session में भी ये सारी चीजें पूछ सकते हो. ठीक है. So thank you so very much. See you in the next lecture and take care. Allah Hafiz.